1800 तक के टारगेट आपको एक साल में एचएल में देखने को जरूर मिलेंगे। एचएल में 1750 1800 की बात हो रही है। स्टॉक आपके सामने 1% ऊपर, ओपन इंटरेस्ट में करीब 8% तक की तेजी देखने को मिली है। लगे हाथ बीएल पर भी नजरें होनी चाहिए क्योंकि वहां पर अब तक मोमेंटम नहीं था, लेकिन वो स्टॉक अब 1.5% ऊपर आने लगा है और ओपन इंटरेस्ट में भी एडिशन है। तो ये एक पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ इस समय उस खबर के मद्देनजर। चलिए अब आपके लिए ग्लोबल पिक्चर एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आते हैं। डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा है तेजी देखने को मिलेगी वहां पर। कल का सत्र मुनाफा वसूली वाला था, 171 अंकों की बढ़त डाउ फ्यूचर्स में। यूरोप के बाजार मजबूत खुले हैं और आज एशियन तस्वीर भी अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा एक मिक्स्ड बैग थी। निकाई ऊपर था लेकिन हैंगसेंग में कुछ दबाव देखने को मिला। मैं ग्लोबल मार्केट्स इसीलिए आपके लिए पेश कर रही हूँ क्योंकि एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव और ग्लोबल पर्सपेक्टिव से इंडिया में फंड फ्लो कैसा रहेगा ये समझने की बारी है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अब एलारा कैपिटल के राज भट्ट सीधे लंदन से। राज, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है ग्लोबल मार्केट्स में। पहले कंसर्न ऑफ कोर्स वो फेडरल रिजर्व के रेट हाइक का खतरा और डर तो था ही, लेकिन रशिया यूक्रेन ने और लिक्विडेशन पर दबाव दिया है। ये बताइए, एक महीना लंबी खिंच चुकी है ये जंग और किसी को कोई विजिबिलिटी नहीं है कि इसका अंत कब होगा, कैसे होगा। आप इस कॉन्टेक्स्ट में फिर इक्विटीज के ट्रेड पर क्या विचार रख रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है ये जो फ्लाइट टू सेफर हेवन गोल्ड दूसरे एसेट क्लासेस में हुई थी वो अभी भी एक्टिव है और वही शायद पैसे बचाएगा? थैंक यू। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि नाउ वी हैव ए प्रॉब्लम विद द इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम यूक्रेन वॉर से पहले भी थी। यूक्रेन के बाद जब से आफ्टर दिस वॉर वो और एग्जैजरेट हो गई और नाउ ऑब्वियसली पॉलिसी मेकर्स हु वर कॉलिंग इट ट्रांजिटोरी, नाउ दे आर रियलाइजिंग दैट दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। एंड आई थिंक मेरा व्यू तो ये है कि नाउ we'll have a recession. I think maybe because जो हम yield curve देखते हैं 2 years or 10 years, now it's all flattening. हमें केवल 20 basis point का difference रह गया 2 year और 10 year treasury में. So I think inverted yield curve is the new talk which market is going to have. And normally inverted yield curve will lead to recession. और ये सब चीजें because once you have inflation, there will be demand destruction. Demand destruction means less investments by companies. So it's a cycle, vicious cycle. So I think Fed rate hike, inflation is equally important. Ukraine war is there; it's going to be there, and what it's causing is more inflation because Russia is, dominant player in oil and gas commodities. So we're going to see spike up in the oil prices, gas prices, commodity prices, and I think the Fed and other central bankers are going to struggle to contain inflation by the marginal interest rate increases. So, and nobody is today inflation running 6, 7, 8% in developed economies, which is unprecedented. And the interest rates hike is on the card, and wage inflation is high. The market, I don't know why the exuberance in the market. So, I'm a bear, in the market. I think markets are going to correct big time, and obviously the impact will be felt in India also. But India has very good fundamentals in place because we have the demography, we have the policy framework in place. I think short term we might see some shocks coming from, especially from US, because the Fed, they have the dual mandate of managing inflation and also managing growth. So they are in a dilemma now because if they hike up the interest rates too much, the growth is going to get impacted. So it'll be interesting to see the interest rate, how they manage the whole trajectory. राज, क्योंकि आपने कहा दैट यू आर अ बेयर एट दिस पॉइंट इन टाइम, जो पिक्चर सामने है वो अच्छी नहीं है। इन्फ्लेशन की मार इनफैक्ट और भी जोर से पड़ने वाली है अक्रॉस द ग्लोब और ऑफ कोर्स भारत में भी। ऐसी स्थिति में ये कितना पेनफुल, कितना दर्दनाक साबित हो सकता है इक्विटी फ्लोज के लिहाज से? हाल में हमने देखा है एफआईआईज ने बड़े पैमाने पर पैसे वैसे भी निकाले हैं। क्या आपको लग रहा है ये बिकवाली का सिलसिला जारी रहेगा? कितना कूल ऑफ देखने को मिल सकता है इक्विटी मार्केट्स एंड स्पेशली इंडिया में? I think major selling by FI is already done, so we can still see some outflows depending on how the war situation, geopolitical risk is high. Obviously, people will move money out from
India to dollars being a safer, currency. But, that is a dynamic situation, war situation changing. But I think the major problem is that how Fed is going to manage the inflation, because inflation is really, really high and they are far behind the curve. And the higher interest rates are going to hit US, in terms of economic demand, and the demand destruction is on the card. If that happens, then obviously investment cycle will go down, and then obviously the recession comes, it's not going to be over in few quarters, it's going to last for a few years. Yes. अच्छा, अब तक की जो बातें हुई उसमें आपने खुल के कहा, अगर आप देखें कि इन्फ्लेशन एक बहुत, अगर आप देखें, महत्वपूर्ण पहलू है, रिसेशन में हम हैं। भारत में अगर आप देखें, आपने ये कहा कि ऑलरेडी एफआईएस की सेलिंग काफ़ी हद तक हो चुकी है, और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर लोकल इंस्टीट्यूशंस की और रिटेल इन्वेस्टर्स की काफ़ी बाइंग डाउन साइड को प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन जब, क्योंकि आपने ग्लोबल मंदी की बात की, रिसेशन की बात करी, तो आपके प्रिफर्ड शॉर्टिंग या फिर एग्जिट कैंडिडेट्स क्या होंगे? मैं इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप कहते हैं ग्लोबल मंदी, रिसेशन, हमने मेटल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखा। आज की तारीख में निफ्टी मेटल इंडेक्स एंड मेटल्स अक्रॉस द वर्ल्ड हायर लेवल्स पर सस्टेन कर रहे हैं। आपकी राय क्या है? प्रिफर्ड शॉर्ट्स क्या है इस वक्त, और या फिर वो क्लस्टर्स, वो सेक्टर्स जहां से इस वक्त एग्जिट करना चाहिए आपको? Yeah, I'm talking about metals. So we have been bullish all along, and metals is going to perform because inflation hedge metal, and also the Russian situation has added fuel to the fire. So metal will continue to outperform for foreseeable future unless we have a sizable demand destruction, and then we have a capacity, excess capacity. But right now we don't have that problem. And the shorting, I think we have for our global portfolio, we are shorting the S&P index as opposed to shorting a particular stock, because it's very difficult to short a particular stock. It's just we are short on the S&P, and that's the only way we can hedge our portfolio, and we more in cash. I'm talking about global point of view. India, we got exposure in obviously metals. We still feel banking is a sector, pharmaceuticals and FMCG. There's more defensive sectors, I think, going long on them basically. And the global companies like IT and all that, we see that they will get affected if the demand destruction, because the investment, when the recession comes, first thing happens is that people stop investing money in investments. So I think that will hit our large global IT companies. And so that's where we are. Yeah. भट्ट साहब, जो नंबर्स एसेंचर्स ने दिए या फिर जिस प्रकार का ग्लोबल, जिस प्रकार का, माफ कीजिएगा, आउटलुक उन्होंने शेयर किया, आपको लगता है कि आईटी इस वक्त एक प्रेफर्ड शॉर्ट भी हो सकता है? शायद मेरे ख्याल से आपने ये बोला कि आप आईटी से एग्जिट करना चाहेंगे, लेकिन क्या एक आईटी प्रेफर्ड शॉर्ट भी हो सकता है कैन लेवल्स पे? See, I don't short, stocks individually, because it just, everybody has investment philosophy. We don't do it. And our India fund is long only, and we short on global markets. So we have a S&P put basically on the US market. That's the only short we have. And we are happy with that, and we will hold on to it, because we believe the correction is around the corner. It's just denying we have got all factors for corrections in place. We have got high inflation, Fed increasing interest rate, with geopolitical risk. I think this frenzy in the market will one day will stop. It's a matter of time, I guess. मिस्टर भट्ट, आपके पोर्टफोलियो का आप इस समय कितना कैश होल्ड कर रहे हैं? और क्योंकि आप इंडिया पर लॉन्ग ओनली हैं, भारतीय इन्वेस्टर्स को आपकी क्या एडवाइस होगी? कितना एक्सपोजर एट दिस टाइम रखना चाहिए इंडियन इक्विटी में? I think I'll recommend that they should move to defensives and not get carried away by the movement in the stock prices, because stock prices moving rapidly, sometime up, sometime down. There's a lot of volatility. I think for a investor which is dependent on income from stock market, it's good to sit a sizable position in cash. Maybe I'll say 60% cash, 40%. That's very high. I'm talking about retail investors. Obviously, mutual fund, they have to they have to be invested, and they have no choice. They can't sit on cash. So I think defensives, metals and defensives. I've always maintained ITC is one stock which looks very attractive, and we've been buying ITC on dips.
and it's done very well over last few months. So good to sit on defenses, which are also the the opening play like hotels and all that. And these are sectors which will do very well in India. So that's one area where we can see more earning growth. आईटीसी के निवेशक तो बहुत खुश होंगे क्योंकि एक तरफा तेजी हमने देखी है 250 के ऊपर और आप कह रहे हैं आप काफी बुलिश है. ऑफ कोर्स होटल्स में एक अपॉर्चुनिटी. इनफैक्ट आपने रिटेल निवेशकों को कहा कि 60% कैश में होना चाहिए, 40% आप इन्वेस्ट करें. क्या सोना इस समय एक वायबल अपॉर्चुनिटी है जहां पर फंड्स को पार्क किया जा सकता है? क्या उस पर आपकी कोई टिप्पणी है, कोई रिमार्क्स है? As a part of portfolio, you can always hold something in gold. We don't invest in commodity. We like to buy commodity stocks as opposed to buying commodity directly. Like oil is also an interesting sector. Where there could be a lot of volatility. If you have you're brave enough, I think you can still go long on oil because the Russian situation is alarming. And tomorrow, if there is more sanctions on Russia, we'll have a supply shocks on the oil and gas. That's a sector I think one can be bullish depending on what happens in Russia. चलिए भट्ट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. ग्लोबल पर्सपेक्टिव, इंडियन पर्सपेक्टिव सब आपने शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया. और थैंक यू. उम्मीद करते हैं सर जब आपसे अगली बार मुलाकात हो तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा ये युद्ध या तो खत्म हो चुका हो या फिर अगर आप देखें कोई ना कोई ब्रेक थ्रू आ चुका हो, अंतिम पड़ाव में हो, ताकि एक फ्रेश सेंटीमेंट अगर आप देखें नया अच्छा सेंटीमेंट बाजार में हो. बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. अभी कुछ देर पहले शारदा कॉपकॉम की मैनेजमेंट थी, हर्षदा मौजूद थी, वो कह रहे थे कि बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ा है और जल्द से जल्द अगर आप देखें वॉर ख़त्म भी हो जाएगी. क्या पता, कभी कभी किसी के अगर आप देखें शब्द जो हैं वो अच्छे और सही साबित होते हैं. फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर द बेस्ट. लेकिन आज याद रखिएगा ग्लोबल मार्केट, हाँ वाकई. और देखिए आज ग्लोबल मार्केट्स बहुत क्रिटिकल जंक्चर पर बैठे हैं. डाउ फ्यूचर्स कुछ देर में आप लेके आएंगे, मैं आपको बताऊंगा, एक दो चीज़ बताऊंगा यूएस मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से. एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेके छोटा सा लौटते हैं, फिर डीलिंग रूम में यतिन से बातचीत करेंगे और हर्षदा आपको एग्जैक्टली ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है वो बताएंगे. लेकिन कुछ फैक्टर्स ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं.